हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तलहा अहमद खान, आपका एसीसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेंटर। अच्छा, हमने सो फार आई वेलकम यू गाइस फॉर द फर्स्ट पोस्ट मॉक वेबिनार सेशन। इसके अंदर हमने जो बेसिकली डिस्कशंस करनी है दैट इज मेजरली अबाउट कि जी आपने जो चीजें अभी अटेम्प्ट की थी और वो एरियाज जो मेजरली हमने कवर किए थे प्रायर टू मॉक। ठीक है, तो वो एरियाज को हम कवर करेंगे। एक जनरल डिस्कशन होगी ताकि आप लोग अपने जो कंसर्न्स थे, जो एरियाज आपने मिस आउट किए थे या कुछ एरियाज में आपको कंफ्यूजन थी, वो हम डिस्कस कर सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सॉल्व्ड the questions that we have that had appeared in the mock examination, और उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस को हम एक दफा डिस्कस कर लेंगे, सारे मेजर क्वेश्चंस को मेजरली। सो इन दैट पर्सपेक्टिव, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो यू कैन जस्ट राइट इट ऑफ ओवर हियर। मुझे आप मैसेज कर सकते हो ड्यूरिंग द डिस्कशन एंड एज वेल एज रिगार्डिंग द रूल ऑफ थंब। मैंने सबके माइक्स ऑफ किए हैं, सबके वीडियो कैम्स भी ऑफ हैं। So at this point in time, just I will entertain the question that will appear in the message box. अच्छा, so moving forward, अब तक जिन जिन लोगों ने अटेम्प्ट किए थे और उन्होंने मुझसे अपनी ट्रांसक्रिप्ट शेयर की हैं, so उसके अंदर एक जो कॉमन एरियाज थे मैं उन पे ज्यादा फोकस करूंगा ताकि जो इजी एरियाज हैं जो सबको आते थे उसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम हमारा ज़ाया ना हो। और फिर देन आफ्टरवर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग कि आगे हमने कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। सही है? So let's move on. So in the first phase, you guys very much known on the fact that the question paper is divided into three major parts. That is the part A, part B, and part C. You guys knew the fact, but हो सकता है कि कोई एक आध शहजादा हो जिसको अभी भी ये ना पता कि सर पेपर कितने पार्ट्स में आता है। खैर, anyway, so section A is of 15 MCQs, section B is of 3 questions, 3 compulsory questions और 10 marks each होते हैं, और हर एक क्वेश्चन के अंदर you will get the MCQs और the objective question. पॉइंट इज दैट सो फार हमने जितना सिलेबस कवर किया था उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बन सकते थे वी हैव प्रिपेयर्ड और वी हैव कंपाइल्ड, और वो हमने इसमें प्रेजेंट किए। नाउ दिस पेपर इज फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग योर existing knowledge, not it's not the true level or true difficulty level of ACC examination. So इसका perspective revision था। जो second mock हुआ that will be a tough one, a hard one in a way. So let's move on. अच्छा, these are the core areas that we had covered in this mock. Now these are the basic things, you know, instructions and all. Section A is of 15 MCQs. Mostly students ने सही attempt किया था, अच्छा attempt किया था, so I am ignoring this area. अगर किसी को कोई concern है, specific concern है, one can discuss this section or any particular MCQ at the end of this session. Means सबसे आखिर में हम जब discussions कर रहे होंगे उसके अंदर हम देख लेंगे. Right now I want to start directly from section B and will move towards section C. Now, considering best for our time, rather than solving at this point in time, मैंने pre-solved किए हैं सारे questions, so that we will not waste time discussing and solving each and every part. So let's move on from the section B. Bismillahirrahmanirrahim. Answer the following objective questions, each of which carries 2 marks accordingly. Okay, this is the first MCQ of the first objective question. The principal objective of macroeconomic policy include which of the following? अच्छा, इस टाइप के MCQs जो हैं जब आते हैं, जब objective question आते हैं,
So you guys should have grasped overall the जो key concepts हैं that are covered in the theoretical areas, उनका एक overall एक इमेज आपके जहन में होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए. अगर आप लोगों ने एक दफा भी वो वीडियो लेक्चर सुना होगा या एक दफा भी आपने उस चैप्टर को या नोट्स को कवर थ्रू किया होगा, यू विल गेट द फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर देयर इज वेरी सिंपल. इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पर्सपेक्टिव. But balancing the government budget is never been a macroeconomic policy. Government budget can be a part of your fiscal policy separately, but macroeconomic policy objective के अंदर ये तीन levels आते हैं. So only 1, 2, and 3 is the correct answer. Next, moving on towards the next part, that is comment on the validity of the following statement. Interest rates smoothing is the policy of the central banks to move official interest rates in a sequence of relatively small steps in the same direction rather than waiting until making a single large step. आई थिंक सो मैंने इस एरिया को इतना ज्यादा कवर नहीं किया था या इस एरिया को शायद डिस्कस नहीं कर पाया था मैं अपने वीडियो लेक्चर के अंदर, बट इट इज अवेलेबल इन द नोट्स एज वेल. इंटरेस्ट रेट स्मूथिंग इज अबाउट दैट, जैसे पाकिस्तान में होता है, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा होगा, दैट हम मॉनेटरी पॉलिसी को हर 2-3 महीने में असेस करते हैं कि जी क्या इम्पैक्ट है इसका. हम एक डेफिनेट टर्म के लिए या एक साल के लिए फोकस नहीं रखते कि जी एक इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आ गई, बस साल तक इसको नहीं छोड़ा जाएगा, इसका इम्पैक्ट एक साल के बाद देखा जाएगा. हम एक क्वार्टरली बेसिस, इवन ऑन मंथली बेसिस, 2 मंथली बेसिस, हम यहाँ पे उसको एक स्टेप 5 लेके चल रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम ऑब्वियसली कंपैरेटिवली एग्रेसिव थे इन द जब मॉनेटरी टाइटनिंग शुरू हुई थी इस साल के शुरू के अंदर, बट स्टिल हम करंट काइबोर आई थिंक सो इट मूविंग अराउंड 10.25, उस तक हम एकदम नहीं पहुंचे थे कि जी 6.5 से एकदम 10.25 तक चले गए. हम इनने एक दफा 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, फिर then we move towards 150 I guess so this is about interest rate smoothing इसको कहते हैं. Then if governments wish to influence the amount of money held in the economy or the demand for it, they may attempt to influence where the interest rate. This is a simple monetary rate policy statement कि monetary policy होती क्या है, आप money movement को majorly interest rate से control कर रहे होते हो overall. So the correct answer is B. Statement 1 is true, statement 2 is true. Okay, now moving towards the next part. Comment on the validity of the following statements. Demand pull inflation might occur when aggregate monetary demand in the economy and hence demand for particular goods and services enable companies to raise uh, prices and expand profit margins. Okay, and second is cost push inflation will occur when there are increases in the production cost independent of the state of demand, example rising raw material cost or labor cost. I think so this is quite simple and straightforward. Demand pull inflation की definition है simple and cost push inflation की definition है, so it is quite straightforward. So correct is the answer B. Statement A 1 true and statement 2 true. Okay. Now let's move on to the next part. A variety of corporate governance rules have been introduced in different countries, but the principles of the common to all typically include the chairman and the chief executive officer should not be the same individual. Okay.
Uh, the NED, non-executive director on the board, should prevent the board from being dominated by executive directors. This is really true. The audit committee should consist solely of executive directors. This is, I think, so not true, because it's not like this. Audit committee के अंदर सिर्फ executive directors नहीं हो सकते. A remuneration committee should be established to decide the remuneration of executive director. This is true. So first, second, and fourth is the correct answer. So C is the correct answer. The audit committee should consist of non-executive directors only. Okay, now changes in monetary policy will influence which of the following factors: the exchange rate, the cost of finance, the level of consumer demand, the level of inflation. So the monetary policy will obviously influence all the four options. So this D is correct. So those who want is the explanation, detailed explanation क्या है, they can read it through there. This is simply monetary level discussion जो हमने cover की थी in our webinar, that monetary policy which increases the level of domestic interest rate is likely to rise exchange rate as a capital is attracted to the country. This is a statement one. Okay, so in short, all these aspects will be impacted by monetary policy. For detail discussion, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है या कुछ ऐसा issue है on the monetary policy, you can revisit the lecture. आप जाके देख सकते हो. और साथ साथ अगर कोई query है अभी इस MCQ से related, you can ask me right now. ओके, जो सबसे इम्पोर्टेंट है द पार्ट द लेवल ऑफ कंज्यूमर डिमांड, इसके अंदर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हुए थे कि ये किस बात से होता है. सो द पीरियड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड हाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस द कंज्यूमर डिमांड. जैसा कि आजकल पाकिस्तान में या किसी भी मॉनेटरी टाइटनिंग कंट्री में हो रहा होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, जिससे ओवरऑल कॉस्ट इन एन इकोनॉमी इंक्रीज होती है, लोग सेविंग्स की तरफ ज्यादा जाते हैं. जब सेविंग्स की तरफ ज्यादा जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास जो लेवल ऑफ कंज्यूमेबल इनकम है वो कम हो जाती है. सो ओवरऑल फिर मार्केट के अंदर, एक रिटेल मार्केट के अंदर भी डिमांड का इम्पैक्ट आता है और लोग अपनी ओवरऑल डिमांड को रिड्यूस करते हैं. सो let's move on to the next part. Answer the following objective question, each of which carries marks accordingly. Governments have a number of economic targets that are part of their fiscal. I think so. This is policy words. Fiscal policy. Which of the following government actions relate predominantly to fiscal policy? Decreasing the interest rates. Okay. Reducing the tax while maintaining public spending, using official currency reserve to buy the domestic currency, borrowing money from capital market and spending. I think so. There is some problem. ये हमने other किसी question का इधर print out हो गया. So let's discuss this question. Government have a number of economic targets as a part of fiscal policy. Which are the following government relates predominantly to fiscal policy? Decreasing the interest rates in order to stimulate the consumer spending. This is predominantly monetary policy क्योंकि interest rate की movement से हो रहा है. Tools for fiscal policy क्या होते हैं? That is taxation and government spending are the major tools. So उस perspective हमने सोचना है. Reducing taxation while maintaining public spending, this can be one of the answer. Using official foreign currency reserves to buy domestic currency, okay, and borrowing money from capital market and spending on the public work. Okay, this is the exchange rate currency policy. This is the monetary policy from my perspective, and the correct answer is 2 and 4. So C is the correct answer. Okay, any confusion to anyone? Yeah, so I'm moving on.
मस्ट प्लेस, मेरा नूरानी चेहरा कुछ मैं दरम्यान में ले आता हूँ। चलिए जी, a company sells inventory for each for sorry a company sells inventory for cash to a customer at a selling price which is below the cost of the inventory items. How will this transaction affect the current ratio and quick ratio immediately after the transaction? Okay, so part क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इन्वेंट्री सेल कर रहा है कंपनी फॉर कैश टू अ कस्टमर। कैश के अगेंस्ट उसने इन्वेंट्री सेल की। अगर हम इसकी सिंपल एंट्री देखें तो हमारा कैश बढ़ा है, कैश डेबिट हुआ और सेल्स क्रेडिट हुई है। ओके, एट अ सेलिंग प्राइस विच इज बिलो द कॉस्ट ऑफ द आइटम्स। ठीक है, और हमने इन अ वे इस आइटम्स को लॉस में सेल आउट किया है। ठीक है, how will this transaction affect the current ratio and quick ratio immediately after the transaction? कैसे हमारे current ratio और quick ratio पे impact आएगा? अच्छा, अब हमने जो इन्वेंट्री बुक की होगी अपनी बुक्स के अंदर, that will be at cost। अब वो इन्वेंट्री चली गई। अब इन्वेंट्री जब चली गई है तो इसका और हमारे पास कैश आया, so cash is lower than the inventory। And we know that current assets divided by current liabilities, that in current assets we have all the current assets, cash, inventory, and in the quick ratio we don't have the stagnant part of the current assets, या less liquid part of the current assets। mostly हम उसमें inventory को consider नहीं करते। सो कंसिडरिंग द क्विक रेशियो, क्योंकि इन्वेंट्री को कंसिडर ही नहीं किया जाता और सारा इम्पैक्ट और ये सारी सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई इन्वेंट्री के पर्सपेक्टिव में है। सो ओवरऑल आपका क्विक रेशियो के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि पहले इन्वेंट्री तो नहीं थी लेकिन अब कैश आ गया आपके पास। जब कैश आया तो क्विक रेशियो शुड बी बेटर, क्विक रेशियो विल बी इंक्रीजिंग। On the other hand, as we remember that quick ratio formula क्या होता है? All the current assets minus inventory divided by current liabilities। So in the current assets portion, overall current assets increase हुए in that sense that आपका inventory से पैसा निकल के आया कैश के अंदर, और inventories को आप वैसे कंसिडर नहीं करते quick ratio के अंदर। So overall assets apart from inventory has increased। ठीक है, for from the perspective of quick ratio I'm talking, and so the quick ratio will increase। on the other hand current ratio will decrease। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री ज्यादा वैल्यू की थी और वो एट कॉस्ट आपने उसको प्राइस किया होता, और फिर जब आप जो आपको अमाउंट रिसीव हो रही है दैट इज लोअर than the amount you're receiving, so your current ratio overall will decrease। so the correct answer is part C, so decrease, increase। okay, okay, this is a simple cash budget question that is from the working capital areas, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एरिया से कवर करते हैं। कैश बजट वाज ड्रॉन अप एज फॉलोज। आपको हर साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर गिवन है। द क्लोजिंग कैश बैलेंस फॉर दिसंबर इज बजटेड टू बी इज क्वाइट सिंपल। आपने कैश बजट ड्रॉ करना है। यू हैव द रिसीट्स ऑफ एवरी मंथ एंड यू हैव द पेमेंट्स ऑफ एवरी मंथ। सो टोटल रिसीट्स आप लेकर आए, उसमें से टोटल पेमेंट्स को लेस किया, आपका नेट कैश फ्लो आ गया। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, जो ओपनिंग बैलेंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल था, क्लोजिंग आया। दिस ईयर्स क्लोजिंग विल बी नेक्स्ट ईयर्स ओपनिंग, एंड टू एंड फ्रो you will reach to the point of 2.950। that is the total deposit। so D is the correct answer in this term।
For a retailer, let as sales, P purchases, O opening, C closing, D opening receivables, R closing receivables. So, which one of the following best expression for receivable days for the period end? Okay, so we are talking about, again, I have made a mistake. I have means over here I have written down some others explanation. Anyway, so इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या कह रहा है कि आपसे रिसीवेबल डेज का वो फॉर्मूला पूछना चाह रहा है. सो रिसीवेबल डेज फॉर्मूला इज सिंपली व्हाट, आपने क्या करना होता है, यू शुड हैव द एवरेज रिसीवेबल्स. ओके, सो अब एवरेज रिसीवेबल्स की हम बात कैसे करेंगे, that you have opening, you have closing. So आपने receivables period निकालना है, ठीक है. You have the opening receivables, you have the closing receivables. D is what, opening plus R is for closing. So D plus R is your overall receivables divided by credit sales. This is sales. So this is the overall into 365. So आपका receivable days period यहाँ से आ जाएगा. This is the overall formula for retailers, from the retailer's perspective. Okay, in case of any confusion, आप you can refer to the lectures or the video lecture जो हमने discuss किया था वहाँ पे, or in the formulas in the handbook as well. A company has our company has 31st December as its accounting year. On 1st January, a new machine costing 2 million is purchased. The company expects to sell the machine on 31st December 2006 for 350,000. The rate of corporation tax is 30%. Tax allowable depreciation obtained is 25%. On the reducing balance basis, the balancing allowance is available on disposal of the asset. The company makes sufficient profits to obtain for tax relief, tax allowable depreciation as soon they arise. If the company's cost of capital is 15% per annum, what is the present value and tax allowable depreciation at 1st January 2006? Okay, to the nearest dollars. Okay जी. In simple terms, आपने इसकी NPV निकालनी है, आपको present value terms इसके आपने find out करनी है. Okay, so in short, the investment is made on 1st January 2005 में हमने की है. So first set of, again, the accounting period is 31st December 2005. That the tax saving will therefore be at 31st December 2005. That is first time. Okay, आपने 1st जनवरी को खरीदा, पहली टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन कितना, 500,000 का. सो एंड सेकंड इज ऑन द 31st ऑफ दिसंबर. सो इन बोथ पीरियड जो आपने टैक्स सेविंग की थी, दैट इज ऑफ 150,000 एंड 345,000. सो अगर हम इन दोनों को प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो यू विल गेट 391,320. सो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन एट 1st जनवरी? ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आपसे पूछा जा रहा था कि आपने जो डेप्रिसिएशन, जो टैक्स अलाउबल पोर्शन में जो टैक्स सेविंग कर रहे हैं, नॉट द टैक्स, जो टैक्स सेविंग कर रहे हैं, ये जो सेविंग्स कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है. तो ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, और मोस्टली काफी लोगों ने गलती जो की मिड में वो किया कि 500,000 पे ही प्रेजेंट वैल्यू लगा के दे दिया, या ये वाला मिस कर दिया 350,000, और फिर डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू आपने इसी पे अप्लाई करके निकाल ली. दैट वाज रॉन्ग. द स्टेप वाज सिंपली, आपने सबसे पहले अपनी टैक्स सेविंग निकालनी है, देन प्रेजेंट वैल्यूज को आपने मीन डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है. ओके, नाउ next part. Answer the following objective question in each of the
each of which carries 2 marks accordingly. A project consists of series of cash outflows in the first few years, followed by a series of positive inflows. The total cash inflows exceed the total cash outflows. The project was originally evaluated assuming a zero rate inflation. The project were re-evaluated on the assumption that the cash flows were subject to a positive rate of inflation. What would be the effect on the payback period and the internal rate of return? Okay, so this question is discussing about the internal rate of return और payback period के ऊपर impact. अच्छा, series of cash outflows थे for first few years followed by a series of positive cash flows. शुरू के सालों में सिर्फ cash outflows हो रहे हैं और टोटल कैश इनफ्लोज और जो टोटल कैश इनफ्लो हुआ है वो आउटफ्लो से ज्यादा है. इसका मतलब है ओवरऑल पॉजिटिव कैश फ्लो है. तो प्रोजेक्ट वाज ओरिजिनली इवैल्यूएटेड assuming a zero rate inflation. इसका मतलब है कि हमने assume किया इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को इग्नोर किया है और we are not considering inflation into our account. Okay, so assumption that is subject to a positive rate of inflation. जब positive rate of inflation के साथ गए हैं, अब हम सोच रहे हैं कि inflation होगी और एक upward trend में जाएगी. So what would be the effect on inflation period and the internal rate of return? Okay, so payback period obviously will decrease. Why? पेबैक पीरियड इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि आपने इन्फ्लेशन या पॉजिटिव कंसिडर किए, तो इसका मतलब ये है दैट ओवरऑल आपके जो नेट कैश फ्लोज हैं आपके पहले शुरू के सालों में नेट कैश आउटफ्लोज हैं एंड देन देयर आर कैश इनफ्लोज एक्सीड द कैश आउटफ्लोज. बट जो कैश शुरू के सालों में आपने कैश जो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट की वजह से कैश आउटफ्लो था वो कम लिया हुआ होगा. इसी तरह जो कैश इनफ्लोज हैं डेट वुड नॉट बी कंसिडरिंग इन द फैक्ट कि आगे चल के आपके कैश फ्लोज अगर हमने उसको इन्फ्लेशन बिल्ड किया तो इट वुड रिजल्ट इन ओवरऑल डिक्रीज. अच्छा, अब इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? वी कैन कंसिडर इट थ्रू एन एग्जांपल. आई हैव क्रिएटेड एन एग्जांपल ताकि आपको पे बैक पीरियड और आईआरआर के एग्जांपल मीन प्रैक्टिकली समझ आए. यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट सिनेरियो ये कुछ सीन था कि वी वर इग्नोरिंग द इन्फ्लेशन और मैंने अज्यूम किया कि सब 100 पे चलेगा. देन आई बिल्ड एन इन्फ्लेशन ऑफ 10% लेट्स से, एंड इन्फ्लेशन के बाद कैश फ्लोज पोजीशन कुछ यूं होगी. सो यू कैन सी दैट आपने जो 100 की शुरू में इन्वेस्टमेंट की है 100 एंड देन 110, आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ गई. इसकी वजह से ओवरऑल आप जो सोच रहे थे कि जो चीज मैंने 200 की पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट आउटले किया है, वो चला गया 210 के ऊपर. ना ऑब्वियसली जब आपको 210 कवर करना है इन कंपैरिजन टू 200, सो इन द अपकमिंग इयर्स आपने देखना ये है कि क्या मैं कौन सी ईयर तक जा रहा हूँ. सो पेबैक पीरियड 3 years in comparison to 2.7 years. हाउ कम? पहले हम 2.7 years में कंप्लीट कर रहे थे सब कुछ, नाउ हम कंप्लीट 3 years की तरफ जा रहे हैं. एंड आईआरआर इज अप्रोक्सीमेट will be 30%. अगर हम इसका IRR निकालेंगे with different rates, so we will find कि around 30% का इसका 17% पहले था, अब 30% में चला गया. So in short, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर इन्फ्लेशन बिल्ड हो रही हो, तो what we can say that हमारा ओवरऑल पेबैक पीरियड डिक्रीज हो रहा है और IRR रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है. दिस इज मेक इट अ रूल ऑफ थंब दैट अगर इन्फ्लेशन को बिल्ट इन करेंगे अपने कैश फ्लोज के अंदर तो हमारा पेबैक पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिए, और आईआरआर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट.
Data of relevance to the evaluation of a particular project are given below. Okay, so आपको ये data is given है. Let me close video for a while. Okay, now data of relevance to the evaluation of a particular project are given below. Cost of capital, आपको given है, expected inflation given, expected increase in project inflows, expected increase in the project annual outflow. Which of the following sets of adjustment will lead to a correct NPV being calculated? Okay. यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि जी आप जब एनपीवी निकाल रहे होते हो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जी रियल कैश फ्लोज हो तो रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, नॉमिनल कैश फ्लोज हो तो नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो. सो लाइक विद लाइक चलना है. आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इन रियल टर्म्स. योर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इज 8%, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन कैश फ्लोज इज 6%, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रोजेक्ट एनुअल कैश फ्लोज इज 4%. आपने सबसे पहले आप इन्फ्लेशन को बिल्ड करना है, दैट इज एट द रेट ऑफ 8%. सो आपको मनी रेट फाइंड करना है. देन आफ्टरवर्ड्स आपको अपने कैश आउटफ्लोज को इंक्रीज करना है एट द रेट ऑफ 4%. एंड योर जो आपकी डिस्काउंट परसेंटेज है, जो आपको डिस्काउंट रेट ओवरऑल बनेगा, दैट विल बी डिसाइडेड अपॉन योर दिस इज अ नॉमिनल रेट जो आप कैलकुलेट करोगे. ये किस तरीके से आया है? दिस विल बी सिंपल फिशर फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था, 1 प्लस मनी रेट प्लस 1 प्लस रियल रेट 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट. सो 10% इज द रियल रेट. इन्फ्लेशन रेट को जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी द ओवरऑल इम्पैक्ट. सो आपको जो एट द एंड कैश इनफ्लोज का आप जो इंक्रीज करोगे 6% से, कैश आउटफ्लोज इंक्रीज करोगे 4% से. एंड हमेशा याद रखना, जब रियल से नॉमिनल में जाओगे यू विल बी यूटिलाइजिंग दिस नोन एज दिस इक्वेशन इज नोन एज द फिशर इफेक्ट. आप इसको इस फॉर्मूले से लेके चलोगे तो यू हैव टू कंसीडर द रियल रेट एज वेल द इन्फ्लेशन रेट. सो दिस विल 1.188, that is 18.8%, not just expected इंटरेस्ट रेट. सिर्फ इसको कंसिडर नहीं करना 8% को, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके लेके चलना है. इट्स इजी क्वेश्चन बट समहाउ सम टाइम आपकी sometimes we end up doing silly mistakes. जी गलती हो गई. अच्छा, now let's move on to the next part. The company buys machine for 10,000 and sell it for 2,000 at 3. Running cost of the machine are 3,000 and time to 5,000 and time to 7,000. If a series of machines are bought, run and sold on an infinite cycle of replacement, what is the equivalent annual cost of the machine if the discount rate is 10%? हमने इक्वल एनुअल कॉस्ट फाइंड करनी है. सो अच्छा, इक्वल एनुअल कॉस्ट को हम डिस्कस दोबारा भी करेंगे जब हम रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन करेंगे. राइट नाउ वी आर कवरिंग अप द कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेक्शन. जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेक्शन है वो कवर हो रहा है, उसके बाद हम आगे टाइमलाइन के साथ जाएंगे. ईएसी होता क्या है? ईएसी इज नॉट लाइक कोई मुश्किल सी चीज है. इट्स सिंपली दैट आपने अपने इक्वल जो भी एनपीवी आ रही है उसका एनपीवी को आपने डिवाइड कर दिया with your annuity factor. How this will be calculated? And simply that आपने क्या किया, आपने टाइम जीरो के अंदर 10,000 का एक आउटफ्लो किया था. फिर what you are doing, you sell it for 3,000. आपने 3,000 का सेल किया है. Okay, so the running cost time 1 is 3,000, time 2 is 5,000, time 3 is 7,000. 7 minus 2,000, 5,000 is the net cash outflow. So you can see that 3,000, 2,000 and 5,000.
आपने सबको डिस्काउंट आउट किया, आपको यू आर गिवन द डिस्काउंट 10% इज ओवरऑल डिस्काउंट रेट, आपने एनपी डिस्काउंट टेबल से देखा, यू गेट द डिस्काउंट फैक्टर्स, आपने मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यूज। प्रेजेंट वैल्यूज जो भी हैं इनको सम अप किया, यू विल गेट प्रेजेंट वैल्यू एंड means net present value, and then you will divide this net present value to the sum of all the discount factors, आपने sum करके इसे divide किया and you will get the equivalent annual cost। equivalent annual cost mean के इसके सब कुछ consider करने के बाद एक equal annual cost considering the price value of money क्या बनती है at today's term, so that will be 822888। ठीक है, इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग टॉपिक्स एज वेल। ओके, a project has an initial outflow at time 0 when an asset is bought, then a series of revenue inflow at the end of each year, then finally sales proceeds from the sale of the asset. Its NPV is pound 12,000 when general inflation is 0% per year. If general inflation were to rise 10% per year and all revenue inflows were subject to this rate of inflation, but the initial expenditure and resale value of the asset were not subject to inflation, what would happen to NPV? Okay, अच्छा, अब इस हर इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखा जा रहा है कि आप किस तरीके से, आप कितना आइडिया है प्राइस वैल्यू ऑफ मनी टर्म्स का। ठीक है, इन शॉर्ट जो इन्फ्लेशन का फैक्टर वो कहता है कि आज ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आज के कैश फ्लोस में अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब प्रेजेंट वैल्यू में जाते हैं आपको याद है कि जब आप डिस्काउंट फैक्टर ऑफ टुडेज निकालते तो दैट विल बी दैट फैक्टर इज 1, तो आज के ऊपर जो इन्फ्लेशन फैक्टर है वो तो वैसे ही अकाउंट फॉर हो जाएगा। इन शॉर्ट हम इसको साथ साथ लेके चलते हैं। अच्छा, the project has an initial cash flow of 0 when an asset was, the series of revenues inflows each year and the finally proceed from sale, its NPV is 12,000। अच्छा, अब NPV impact of the initial outflows unaffected, the revenue flows will be subject to inflation but then should be discounted at the money rate, the net effect is no change in the present value। okay, so आपके जो रेवेन्यू फ्लोज हैं वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन होंगे, और जब आप इन्फ्लेशन को जब डिस्काउंट फैक्टर मींस आपने इन्फ्लेट किया और फिर इसको डिस्काउंट आउट किया रहोगे, तो देयर विल बी नेट इफेक्ट इज नो चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू, ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं आएगा। द सेल्स प्रोसीड रिप्रेजेंट अ फ्लो ऑफ मनी, नॉट द फैक्ट नॉट अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। ठीक है, but this will now be discounted at a money rate, lowering the net present value of the project। सही है, जो यूजुअली आपको एक सेल प्रोसीड ऑफ एन एसेट गिवन होता है उसके अंदर इन्फ्लेशन बिल्ट इन नहीं होती। सो आप जब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेके जाओगे तो इट्स नेट इफेक्ट जो है वो आपके कैश फ्लोस को रिड्यूस करेगा, क्योंकि डिस्काउंट आउट हो रहा होगा। सो ओवरऑल आपकी एनपीवी रिड्यूस हो जाएगी इस तरह। ठीक है, सो इन शॉर्ट व्हाट यू नीड टू कंसिडर, जो रेवेन्यू फ्लोज हैं वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन होते हैं, जो सेल प्रोसीड्स हैं दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, तो ऑब्वियसली जब उस एक चीज ऑलरेडी कांस्टेंट है, दूसरी चीज पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है, तो एनपीवी fall करेगी, most precisely probably, and the overall NPV will fall। okay, I guess this is the last part of the section B। When considering standard deviation as a statistical measure, which of the following statement true? Standard deviation is a measure of variability of distribution around its mean. The tighter the distribution, the higher the standard deviation will be। okay, and the wider the dispersion,
the less risky the situation, standard deviation is the weighted average of all the possible outcomes. Okay, in simple terms, जब ये expected values से relate करती हैं और इस area को और ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे in upcoming topics. In short, ये याद रखो कि जब भी आपकी distribution, आपका sample या आपकी overall the period you are considering distribution is starter, तो आपकी deviation उतनी ही high होती है, standard deviation is higher. ठीक है, तो part B or option B is the correct answer. Okay, that concludes our section C. Section B. Now let's move on toward the section C, one of the major area to discuss. Okay, I'm just turning off my running chair. WQZ co is considering WQZ co is considering making the following changes in the area of working capital management. हमने working capital management का question है. It has been suggested that the order size of the product KN5 should be determined using the economic order quantity.